isn't it? Gas at a constant pressure, the ratio of delta Q, delta U, delta W. So delta Q का फॉर्मूला मालूम है, delta U का फॉर्मूला मालूम है, W का भी फॉर्मूला मालूम है. So 7/2 5/2 तो कितना आ रहा है? 3.5:2.5:1. कितना? 3.5. 7:5:2 आ गया? हाँ, yes sir. चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से. Five moles of an ideal gas. 5 moles of an ideal gas is compressed from 2V to V isothermally at T Kelvin. Find the work done in this process. Find the work done in the process. चलो बताओ. सर इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, हाँ NRTL. देखो, हाँ तो कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल. आइसोथर्मल का फॉर्मूला क्या है बताओ जल्दी से. W is equals to nRT log of your V2 divided by V1 ना. हाँ सर. तो बस हो गया आंसर. आ गया क्या आंसर? सर फिर कंप्रेस्ड या एक्सपैंडेड उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा? नहीं होना, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम कंप्रेस मतलब क्या? इनिशियल विल बी इक्वल टू हाउ मच वर्मी? इनिशियल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू क्या लोगे, वो इंपॉर्टेंट है अपने. हाँ सर ठीक है. 2V से V होगा. हाँ तो V1 की वैल्यू क्या लोगे आप? 2V लोगे. और V2 की वैल्यू क्या लोगे? V लोगे. बस उतना था, कुछ नहीं. नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 5 है ना. So 5 into your number of moles is 5 R into T. This one is log. V2 is right now V. This one is 2V. So V gets cancelled. So this will be equal to 5 RT. This one is log. This will become for me 2 power minus 1. Yes sir. मतलब this value will become for me minus of 5 RT. This is your log 2. Yes sir. This will be the answer. आ गया? Yes sir. ये वाला देखो जल्दी से. A monoatomic gas at pressure P1 and volume V1 is compressed adiabatically. Is compressed adiabatically to 1/8 of its original volume. The question is, what is the final pressure? What is the final pressure of gas? What is the final pressure of gas? Options are on the board. 64 times of P1. Next one is P1. Third one is 16 times of P1. Fourth one is 32 times of P1. चलो देखो. Monatomic gas at a pressure P1 and volume V1. यानी ये हो गया P1 और ये वॉल्यूम V1. कौन सा प्रोसेस हो रहा है? एडियाबैटिक. एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है तो V1 is compressed to V1/8. हाँ सर. Isn't? और प्रेशर चेंज हो जाएगा P2. Yes sir. So PV to the power of gamma is equals to constant का फॉर्मूला अपने पास है. यानी P1 V1 to the power of gamma is equals to P2 V2 to the power of gamma. Yes. कर लोगे ना? हाँ सर. तो जल्दी करके बताओ कितना आ रहा. So this can be written as P2 divided by P1 is equals to V1 by V2 to the power of your gamma. V1 by V2 मतलब कितना हो जाएगा बेटा? V2 मतलब ये 8 ऊपर चले जाएगा, 8 to the power of gamma. कौन सा गैस है? मोनोटॉमिक गैस. मोनोटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 5/3. Yes sir.
गामा कैसे निकालते हो? गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f ना। हाँ सर। हाँ, तो P2 वैल्यू कितना हो गया? P2 डिवाइडेड बाई P1 इज इक्वल्स टू 8 टू द पावर ऑफ योर 5/3। तो P2 निकाल दो, बस हो गई बात। So P2 will be equal to your this can be written as of right now for P2 by P1। तो ये हो गया यहाँ पर P1 और this will be 2 power 3 to the power of 5/3। तो ये वाला चले गया। So 2 to the power of 5 मतलब कितना हो जाएगा? 32। 32 times of P1। हाँ सर। Done? यस सर। चलो और एक वाला क्वेश्चन ये वाला है, आप ट्राई करो जल्दी से। जस्ट टेक सम an ideal gas at 27 degrees Celsius 27 degrees Celsius is compressed adiabatically to 8 by 27 of its original volume 8 by 27 of its original volume. The rise in temperature is in the bracket gamma is equals to 5/3। मतलब कौन सा गैस हो गया बेटा? Monatomic। So these are the options given for me। चलो ट्राई करो क्या? कितना है बेटा? पर डाटा बोलो क्या क्या दे रखा है? An ideal gas at what temperature? 27 डिग्री सेल्सियस, यानी T1 is equals to 27 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कितना हो जाएगा बेटा? 27 + 273 है कि नहीं? 300 केल्विन। इनिशियल वॉल्यूम कितना है बेटा? V। फाइनल टेम्परेचर निकालना है अपने को, तो V2 कितना हो रहा है? compressed adiabatic to 8 by 27 of its original volume, यानी 8 by 27 times of your V। तो क्या फॉर्मूला ले सकता हूं मैं? PV to the power of gamma is equals to constant, एक रिलेशन है, लेकिन अपने को चाहिए क्या? टेम्परेचर, यानी TV to the power of gamma - 1 is equals to constant। ये वाला लेंगे ना?
तो ये हो जाएगा T1 V1 to the power of gamma minus 1 is equals to T2 V2 to the power of gamma minus 1. सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो ये बनेगा कितना मेरे को, T2 divided by your T1 is equals to V1 divided by V2 to the power of कितना हो जाएगा, gamma minus 1. ठीक है, so this will be T2 divided by, this will be equal to 300 is equals to V1 is V, V2 is 8 by 27 times of V to the power of gamma minus 1. AB gets cancelled. So this one is a T2 divided by 300 is equals to 27 divided by 8 to the power of gamma की वैल्यू कितनी होगी बेटा, what type of gas it is, कुछ बोला है क्या, Monotone. मोनोटॉमिक 5/3 दे रखा है ना, 5/3 minus 1 यानी दिस वन इज 27 divided by 8 to the power of 5/3 minus 1 कितना हो जाएगा, 2/3. 2/3, isn't it? अब ये इसको सिंप्लीफाई करो, देखो कितना आ रहा, दिस वन इज T2 divided by 300 is equals to, तो कितने में जाएगा बेटा, 3/2, 3/2 to the power of, ये बन जाएगा कितना मेरे को, 3 into 2/3, हो गया ना, हाँ सर. isn't it? तो ये 3 चले गया, so this will be equal to 3 into 3 divided by your 2 into 2 यानी 9/4, so T2 will be equal to 9/4 into 300, तो कितना आ रहा, 675. 675 units will be Kelvin, 675 Kelvin, this must be the answer, 675 Kelvin, 675 तो नहीं है ना, अच्छा राइस पूछा है ना बेटा, हाँ सर. राइस मतलब डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब T2 minus T1 ना, यानी 675 minus initial is 300, Yes sir. 375, this will be a 375 Kelvin, आ गया, Yes. चलो ये वाला देखो, और एक this is also a good model, P is directly proportional to T power C बेटा, ठीक है ना, और ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, क्वेश्चन लिख देता हूँ, मुश्किल हो जाए, in an adiabatic process, in an adiabatic process the pressure P and temperature T of a monoatomic gas, of a monoatomic gas are related by the relation, related by the relation P to the P is directly proportional to T power C, where C equals how much, given in the problem is gamma of your monoatomic gas is equals to 5/3, चलो देखो कितना, in an adiabatic chain the pressure and temperature of a monoatomic gas are related by your P, तो क्या था, directly proportional to T power C, ठीक है ना, Yes, C की sir. वैल्यू पूछ रहा, प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर रिलेशन याद है अपने को, P to the power of 1 minus gamma T power of gamma will be equal to constant, हाँ सर. ठीक है ना, दिस रिलेशन इफ इन यूज, Yes sir. ट्राई करो कितना आ रहा है, Sir, C is equal to -5/3. कितना आ रहा, -5/3. -5/2 आ रहा है, 5/3.
दे 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 थोड़ी थोड़ी देर देख ठीक है रोहन थोड़ी देर बात करो ऑप्शंस आर 5/3 2/5 3/5 5/2 ठीक है माइनस आ रहा आपको हाँ सर कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे होंगे ठीक है इसको देख लेता हूँ P1 माइनस गामा इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट K डिवाइडेड बाय T पावर गामा लिख सकता हूँ क्या हाँ सर तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ K इंटू टी पावर माइनस गामा तो पावर ट्रांसफर करता हूँ P इज प्रोपोर्शनल टू T पावर दिस इज माइनस गामा डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा हाँ सर तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T पावर C का फॉर्म है ना तो C की वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस गामा डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा तो minus of 5/3 divided by 1 minus 5/3 so this is minus 5/3 divided by 1 minus 5/3 कितना आएगा -2/3 -2/3 मैंने चले जा रहा हूँ ना बेटा हाँ सर 3 और 3 भी चले गया so this will be equal to 5/2 हाँ आ सर गया यस सर ठीक है ना चलो ये वाला ट्राई करो और एक बार ऐसे ही होते हैं जेई मेंस में क्वेश्चंस ऑलमोस्ट और स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अपनी ड्यूरिंग एन adiabatic process the pressure of a gas the pressure of a gas is found to be proportional to the proportional to the cube of its temperature. I need the ratio of this one better. The ratio of Cp by Cv for a gas. Options are 4/3, 2/3, 5/3 and 3/2. ट्राई करो सेम इसी वाले जैसा करें वैसे डायरेक्टली अब स्टेप लिख सकते हो बेटा यू कैन यूज दिस रिलेशन डायरेक्टली P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर ऑफ यही रिलेशन है ना बेटा प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन यस सर गामा मतलब क्या बेटा Cp by Cv ना तो गामा ही पूछ रहा है इनडायरेक्टली वो हाँ सर हम्म 3/2 3/2 2 वेरी गुड आ गया यस सर
RMS वेलोसिटीज वगैरह आता है बेटा आपको? हाँ सर। RMS वेलोसिटीज नहीं सर। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में नहीं सर, ये नहीं बताया। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नहीं हुआ अभी? हो गया सर। आइडियल गैस इक्वेशन, मीन फ्री पाथ, हाँ सर, हो गया। VRMS is equal to under root of 3RT वगैरह। यस सर। चलो ये क्वेश्चन देखो, a cylinder of fixed capacity of 44.8 liters contains helium gas at standard temperature. It is standard temperature and pressure. Question is the amount of heat needed to raise the temperature of gas in the cylinder by 20.0 degrees Celsius will be. In the bracket he has given R is equals to 8.3 joule Kelvin inverse mole inverse. ये परसों अटेम्प्ट का क्वेश्चन है बेटा जेई मेंस का। 249 joules, 415 joules, 498 joules and 830 joules. The cylinder of the fixed capacity. Fixed capacity मतलब क्या बेटा? वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। यस सर। वॉल्यूम कांस्टेंट है, कितने नंबर ऑफ मोल्स है बेटा? कंटेन्स हीलियम गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, कंटेन्स फिक्स कैपेसिटी ऑफ 44.8 लीटर्स, मतलब 2 मोल्स, n is equals to 2। तो पूछा क्या? द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड, द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड मतलब डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू व्हाट? n into cv into delta t ना बेटा। हाँ सर। So number of moles is 2, cv will be equal to how much for helium gas? 3r by 2 into delta t, delta t कितना दे रखा है? 20। हो गई बात, A2 gets cancelled, so this is a 3 into 8.3 into 20। तो कितना आसान था, जेई मेंस का क्वेश्चन है बेटा रिसेंट का। So that will be 3 into 2 6 60, 60 into 8.3, 60 into 8.3 कितना आ रहा देखिए? 498। 498 हाँ सर। आ गया। यस सर। 498 joules. Sure. So this question, a vessel contains 16 grams of hydrogen, 16 grams of hydrogen and 128 gram of oxygen at standard temperature, and pressure। ठीक है, so the volume of the vessel is, the volume of vessel in centimeter cube is, options are 72 into 10 power 5, 32 into 10 power 5, 27 into 10 to the power of 4 and 54 into 10 to the power of 4. One mole contains how much better? 22.4. हाँ सर। The vessel contains 16 grams of hydrogen and 128 grams of oxygen at a standard temperature and pressure. The volume of the vessel in the centimeter cube will be equal to how much? यानी दोनों जब मिला रहे हो आप n1 plus n2, that will be equal to n, ठीक है ना? यस सर। तो n1 की वैल्यू कितनी है बेसिकली? n1 is nothing but equal to 16 divided by 2 plus
This will be 128 divided by 32. That will be equal to N. तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने बने? N की वैल्यू कितनी बने देखो? 12. 12. तो ये हो गया 12 moles. हाँ सर. So what is asking? The volume of the vessel. So volume will be equal to how much for me? 12 into 22.4. क्योंकि 1 liter is equals to how much बेटा? 1000 ml ना? Yeah, that will be equal to 1000 centimeter cube milliliter. 1000 milliliter. 1000 centimeter cube. यानी this will be equal to 12 into 22.4 liters मतलब 10 to the power of 3 into centimeter cube. हाँ सर. ठीक है ना? So 12 into 22.4 मतलब देखो कितना आ रहा? 268.8. 268.8 into 10 power 3 centimeter cube. यानी 26.8 into 10 power 4 centimeter cube. Yes sir. 26.7 मतलब 27 into 10 to the power of 4 centimeter. So third option. Done? Yes sir. Sure. ये वाला. 0.056 kg of nitrogen is enclosed in a vessel at a temperature of 127 degrees Celsius. ठीक है? The amount of heat required. Yes, sir. The amount of heat required to double the speed of its molecule. Speed of its molecules in is dash kilocalories. In the bracket is given, take R value is equals to 2 calorie per mole per Kelvin. ठीक है? Yes sir. Integer type question. 0.056 kg of nitrogen is enclosed in a vessel at a temperature of 127 degrees Celsius. The amount of heat required to double the speed of its molecule. यानी speed of the molecules is VRMS. VRMS is equals to under root of your 3RT divided by capital M. यानी velocity is directly proportional to root T ना बेटा? हाँ sir. Isn't it? Yes sir. मतलब what is the relation between them? T is directly proportional to your V square. T is your absolute temperature यहाँ पर. Yes sir. Enclosed in a vessel, यानी अगर vessel में enclosed है आपको, तो volume will be constant है ना? हाँ sir. तो initial temperature will be equal to how much? 127 plus 273. तो कितना हुआ? 400. 400. Sorry, 400 Kelvin. तो T final कितना हो जाएगा? डबल कर रहे हैं ना इसका? हाँ sir. T is proportional to V square. 127. The amount of heat required to double its speed. अगर स्पीड डबल हो गया तो टेम्परेचर कितना बनेगा? 4 टाइम्स होगा ना? हाँ sir. हाँ. तो दिस विल बी 1600 केल्विन. Yes. अगर क्लियर है? Yes sir. तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो. तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू कितना दे रखा है? 0.056 kg into this will be equal to 1000 kg मतलब divided by 28 नाइट्रोजन के लिए. That will be equal to your 1 2 3 56. 56 divided by 28. 28 twos are 56. 2 moles. तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 2 moles आ गई. तो पूछा क्या यहाँ पर? हीट रिक्वायर्ड मतलब डेल्टा क्यू. डेल्टा क्यू इज इक्वल टू n into cv into delta t. वॉल्यूम कांस्टेंट है ना बेटा? हाँ sir. कैसा मालूम हुआ वॉल्यूम कांस्टेंट है बोल के? बिकॉज इट इज एनक्लोज्ड इन ए वेसल. हाँ sir. तो n निकालने का तरीका n cv की वैल्यू 5r/2 into टेम्परेचर डिफरेंस. टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा?
1600 minus 400. So this will be equal to 2 gets cancelled. ये हो गया 5R. 5 into R into this one is how much for me? 1200. यानी 5R की value 2 into your 1200 calories. And that will be equal to how much? 5 2 are 10. 10 into 1200. Yani this will be equal to 12,000 calories. Yani this will be equal to 12 kilocalories. हाँ सर आ गया? यस सर The monoatomic gas performs a work of Q by 4 where Q is the heat supplied. Where Q is the heat supplied to it. आपका SHM हो गया बेटा? यस सर Sure. The molar heat capacity of the gas will be dash times of R during this transformation. चलो ट्राई करो जल्दी से. वर्क डन कितना है बेटा? Delta W is equals to Q by 4. Delta Q is equals to Q. So C is equals to delta Q by N into delta T. मोलर स्पेसिफिक हीट मतलब. हाँ सर चलो देखो कितना आ रहा है. I can use the first law of thermodynamics. This one is Q divided by N into this will be equal to delta T. यानी delta Q will be equal to delta U plus delta W. Delta Q मतलब कितना हो जाएगा बेटा? Q is equals to N into CV into delta T plus delta Q is Q by 4. तो पूरे Q टर्म्स एक जगह ले लो. N into CV into delta T will be equal to 3Q divided by 4. It is N. CV will